Hello, hello students. So today I will discuss about the chromosome theory of linkage. Chromosome theory of linkage. Chromosome and genes. The comparison between chromosome and genes. गत क्लास रे हमें क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ी तो आज क्रोमोसोम जीन्स तो द कंपैरिजन बिटवीन क्रोमोसोम जीन्स तो क्रोमोसोम in an individual the number of chromosome is comparatively less than the number of genes तो गोटे ऑर्गेनिज्म रो बॉडी रे जीन अपेक्षा क्रोमोसोम कम रहे because a number of genes situated on the chromosome and the gene occupy a particular position on the chromosome and each chromosome having a number of genes and the position of the gene is known as locus. So chromosome is known as hereditary vehicle because the genes are hereditary units and hereditary units in that sense it carries the hereditary characters, a particular character controlled by a particular gene. So within an organism a variety of characters are there. So each and every character controlled by individual genes. So that through chromosome the genes are inherited from parent to offspring. In that sense, chromosome is termed as hereditary vehicle and it carries the genes and transmits the character from generation to generation, parental generation to their offspring. So gene transmit करे that through chromosome transmit करे so that chromosomes are hereditary vehicles. So genes are situated in the chromosome and determines the physical as well as physiological characteristics of an organism. Already I have told the each and every character, the morphological features and the physiological characters of the organism controlled by a particular gene or determined by the particular gene and that gene present on chromosome. So genes in the chromosome arranged in a single linear order. Linear order means suppose chromosome and genes are situated in this way. That is the linear arrangement. So a series of genes arranged linearly over the chromosome and the position of each gene is called as locus. जेमिति गोटे स्ट्रिंग रे सब गोटे सूतारे गंठी गंठी पकेले जेमिति अपीयरेंस आसे एक्जेक्टली सेही टाइप रे अपीयरेंस आसुची तो जीन्स इन द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन सिंगल लिनियर ऑर्डर लाइक ए बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग. बीट्स मींस गंठी गोटे सूतारे जेमिति गंठी पके देले जेमिति अपीयरेंस आसीबो एक्जेक्टली सेही प्रकार अपीयरेंस आसीबो एवं प्रत्येक पोजीशन को जीन रे हम लोकस कहउछु सिंगुलर रे लोसियम तार प्लुरल एलओसीआई. So genes duplicate themselves very accurately. After self-duplication of gene, it leads to chromosomal splitting. Chromosomal splitting कितने बड़े हुए ना during the cell division में chromosomal splitting हुए. Chromosome splits into two. One part of the chromosome move to one gamete, another part move to another one gamete. So during the process, the cell division process रे split करे chromosome तो accurately gene multiply करे doubling हुए. Duplication कर साला पर that splits into two parts. So individually half of the chromosome moves to one daughter cell, another half to move to another one daughter cells. So a trait is controlled by a pair of genes or allele जोटा कि हमें TT कोथुल TT RR the pair of allele controls a particular character. Each one is dominant and the other one is recessive. ता भीतर मेंडल को डोमिनेंट रिसेसिव फैक्टर काम करे हेटेरोजाइगस कंडीशन ले जब दीटा डिफरेंट allele remain together. So one allele expresses, another one allele unable to express. So those allele capable to express that is dominant, those unable to express that is called recessive. So during meiosis, both members of chromosome pair as well as allelic pair separate and pass to different gametes. When I just तुमको कहली the meiosis समय सेटा separate हुए एवं दीटा different gamete से pass करी जाए. So this is all about the chromosome and genes. Simple कथा genes और chromosome रा कौन relationship? What are the interrelationship between genes and chromosome? Then incomplete dominance and co-dominance are different. Already तुम discussion सारी incomplete dominance रे तार basic कहा इतना तुमको जो when a particular dominant gene unable to express completely तेणु गोटे complete expression करि पारुनी जोंथि पई कि तार influence reduce करि जाय जेमि रेड ता पिंक कलर आस्तला. Co-dominance रे कहा इतला जे दीटा dominant gene when remain present in the particular locus, both are expresses side by side, both are neither dominant or recessive to each other. जिन ब्लड ग्रुप ए बी रे दिया
तेणु ताको पॉइंट वाइज देखि दियो इन क्रोमोसोम इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे इन हेटेरोजाइगस कंडीशन द डोमिनेंट एलील इज अनेबल टू एक्सप्रेस कंप्लीटली इन हेटेरोजाइगस कंडीशन बोथ द एलील ऑफ ए जीन पेयर फुल्ली एक्सप्रेस्ड हेटेरोजाइगस कंडीशन ले तार डोमिनेंट जीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे कंप्लीट एक्सप्रेस करि पारे नाही बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस बोथ एलील्स इन हेटेरोजाइगस कंडीशन एथि कहूँ कि IA IB दुटा अलग अलग गोटे लोक से रोचे सीधा से हेटेरोजाइगस IA होते होमोजाइगस होता IB होते होमोजाइगस होता कि जो F वाले IA सहित IB रोचे तो सेटा होची हेटेरोजाइगस कंडीशन तो ब्लड ग्रुप AB आसला माने बोथ एक्सप्रेसेस देन इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे इंटरमीडिएट फेनोटाइप इज ऑब्जर्व्ड बिकॉज द डोमिनेंट जीन अनेबल टू एक्सप्रेस कंप्लीटली पार्शियल एक्सप्रेशन करे तो कैरेक्टरटा कंप्लीटली डोमिनेंट जो रेड कलर नो आसी पिंक आसला सो दिस इज द इंटरमीडिएट कैरेक्टर बिटवीन द टू पेरेंट्स रेड एंड व्हाइट तो सब इंटरमीडिएट कैरेक्टर एक्सप्रेशन हुए बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस नोन ऑफ द जीन पेयर इज डोमिनेंट रिसेसिव कई डोमिनेंट नो कई रिसेसिव नो बोथ आर कोडोमिनेंट in case of incomplete dominance the two genes of allelic pair are not related as dominant and recessive there kei dominant no dik recessive no dik incomplete रे but in codominance both dominant traits remain side by side eta already tum individually discussion heichi theory रे खाली जस्ट सिंपली डिफरेंस बिटवीन द तीनटा पॉइंट तो डिफरेंशिएट कर दीची तुम लिखिया पे इजी हो बोली देन कम टू द लिंकेज कौन लिंकेज होउची मने कर गोटिए क्रोमोसोम रे 10टा जीन अच्छी एवं सही 10टा जीन टुगेदरली along with the chromosome inherited to the offspring that means same parental character written in more than 2 generations but more than several generations without any change same parental characters continues so this is the tendency of gene to be inherited together along with the same chromosome to retain their parental characters for more than 2 generations. This is called linkage. This phenomenon is linkage. Tendency of a gene to be inherited together through same chromosome to retain their parental combination for more than 2 generations. That is linkage. गोटे क्रोमोसोम रे जतकी जीन रहिला and along with the chromosome all the genes taku linkage group was because all genes are linked genes because all the genes remain the same chromosome and inherited through the same chromosome and retaining the parental combinations more than 2 generations that is the group of genes called as linked genes those genes present in the same chromosome or that is called linkage group and the characters are inherited that is called linked character. This is the concept of linkage. The linkage defines the tendency of 2 or more genes to remain together in the original combination. Say same original combination, जोटा parental generation थिला, से same combination continue करियो for more than 2 generations. And the phenomenon of linkage was discovered by Botany and Part-7, 2 genetics, जे कि प्रथमे 1986 रे एटा को से डिस्कवरी करथिले. The phenomenon this gene the gene which are inherited together are called linked gene or कोई साथ आप थोड़ा रिपीट करूँगी the genes which are inherited together are called linked genes already कोई तो मुझे गोटे क्रोमोसोम रे जति जीन रहे सेटा को linkage group कहबा because that group of genes present the same chromosome and to be inherited together phenomenon is linkage group of genes are linkage group and the genes individually known as linked genes एवं जो character से control करे तो linked character कहा जाए ऐसी कथा मन रखिए अच्छी. So all the genes which are located in the single chromosome are called linkage group. The total number of linkage groups in an organism is equal to the number of chromosome pair. तो जतरा chromosome pair थिबो linkage group सतरा थिबो. तो गोटे chromosome जति की जीन ला से गोटे linkage group. तो number of chromosome pair जते number of linkage group सते आसीबो. So there are 2 aspects of linkage. That is called coupling and repulsion. What is coupling phenomenon? What is repulsion phenomenon? The tendency of allele to stay together is called coupling. जो कहली जे गोटे group of genes for retaining their parental combination and inherited together through the same chromosome. सही chromosome through रे
यदि गोटे ग्रुप ऑफ जीन मोर देन 2 जनरेशन कंटिन्यू करे ताको आम कहबा कपलिंग फेनोमेनन। रिपल्सन अच्छी कौन ना टू ओनली एवॉइड वन आना से क्रॉसिंग ओवर हुए जो नॉन पेरेंटल कैरेक्टर पड़े आसे एक्सचेंज हो जाए क्रोमाटिड सेगमेंट एक्सचेंज हो जाए से रिपल्सन फैक्टर आसो से इनकम्प्लीट लिंकेज आसो से कथाटी गोटे फेज हूँ रिपल्सन गोटे हूँ कपलिंग। ग्रुप ऑफ जीन टू बी इनहेरिटेड टुगेदर थ्रू द सेम क्रोमोसोम फॉर रिटेन द पेरेंटल कैरेक्टर दैट इज कपलिंग फेनोमेनन। ग्रुप ऑफ जीन कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स इनहेरिटेड सेपरेटली सेटा है रिपल्सन फेनोमेनन। तो क्रॉसिंग ओवर हेले रिपल्सन आसो क्रॉसिंग ओवर नहले लिंकेज माने तुम कपलिंग। ता तले पुणी बुझाई कपलिंग रिपल्सन हाइपोथेसिस रे जे बैटरसन एंड पोनेट 1906 क्रॉस्ड ए स्वीट pea plant purple flower long pollen was crossed with red flower round pollen। दुटा भेराइटी नेले पर्पल कलर लॉन्ग पोलेन दुटा जाक डोमिनेंट रिसेसिव किए ना जाए तो क्रॉस कले सेटा होची रेड फ्लावर और राउंड पोलेन। ताको आसिला जो रिजल्ट आसिला दैट F1 इज टेस्ट क्रॉस का सहित करबो ना टेस्ट को डबल रिसेसिव पेरेंट्स सहित क्रॉस कर से टेस्ट क्रॉस हुए डबल रिसेसिव पेरेंट माने रेड फ्लावर राउंड पोलेन तास तो टेस्ट क्रॉस कर दिया गला। टेस्ट क्रॉस कले जो प्रोजेनी आसिला ता रेशियो अनएक्सपेक्टेड रेशियो आसला किंतु मेंडल फेनोमेनन अनुसार जो डाइहाइब्रिड क्रॉस को आम जो टेस्ट क्रॉस करवा ताले रिजल्ट 1:1:1:1 आसवा कथा एठी रिजल्ट भेरी कला माने 7:1:1:7 आसला। तो पर्पल लॉन्ग निया हितला पर्पल लॉन्ग होची कैपिटल L दैट जो सब डोमिनेंट कैरेक्टर रेड राउंड सब रिसेसिव तो स्मॉल एल तो F1 ले तुम जानी आगुरी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस कहुई कैपिटल L गोटे आसो स्मॉल एल गोटे आसो तो F1 में जोटा आसला से पर्पल लॉन्ग आसो कहीं कैपिटल R गोटे सेट रही जाइए कैपिटल L भी गोटे रही जाइए। तो पर्पल कलर लॉन्ग पोलेन को एक्सप्रेस करने गोटे डोमिनेंट जीन तुम रही जाइए F1 ले सो दैट आसला प्लांट पर्पल लॉन्ग जो टेस्ट क्रॉस करागला टेस्ट क्रॉस कले रिजल्ट आसी पर्पल लॉन्ग 7 पर्पल राउंड आसला 1 रेड लॉन्ग आसला 1 रेड राउंड आसला 7 ये जो मझी दिना 1:1 आसी भल देख पर्पल गोटे पेरेंट रे राउंड गोटे पेरेंट रेड गोटे पेरेंट रो लॉन्ग गोटे पेरेंट एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाइए दिस इज रिपल्सन। आउ दु साइड 7 जो देइछि पर्पल लॉन्ग और रेड राउंड रे सेटा पेरेंटल कैरेक्टर दैट इज कपलिंग। तो सेटा को से बुझेले जे जो तिरा नॉन पेरेंटल कैरेक्टर आसुची सो ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ क्रोमैटिड सेगमेंट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर से रिजल्ट आसुची। क्रॉसिंग ओवर माने डिफरेंट पेरेंट रो आसला डिफरेंट गैमेट को पास कला जोथि पई कि ए डिफरेंट आसुची सेटा से बुझेले जे फ्रॉम सेम पेरेंट ग्रुप ऑफ जीन टू बी इनहेरिटेड टुगेदर थ्रू सेम क्रोमोसोम सेटा होची कपलिंग कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स पास थ्रू डिफरेंट गैमेट्स एंड इनहेरिटेड सेपरेटली दैट इज रिपल्सन। सेइति पई जो 1:1 दिटा आसला सेटा रिपल्सन फेनोमेनन पई आसी 7:7 जो पळे आसला सेटा कपलिंग फेनोमेनन पई आसी एटा एक्सप्लेन हेछि कपलिंग रिपल्सन हाइपोथेसिस। सो दे सजेस्टेड दैट allele coming from the same parent tend to enter the same gamete and to be inherited together that is coupling जो 7:7 result आसी। Similarly genes from different parents enter different gametes जो थी पाई कि एथुरु फाळा सेथुरु फाळा पर्पल आसला सेट राउंड आसला रेड आसला सेट लॉन्ग आसला जो थी डिफरेंट गैमेट पास कला बोली रिजल्ट डिफरेंट आसी। से कहउछि द कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स एंटर डिफरेंट गैमेट्स इनहेरिट सेपरेटली ये होछि कपलिंग रिपल्सन फेनोमेनन होछि या। तापर आसला क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज। तो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज होछि मॉर्गन और कैसल दुई जण 1911 ले गोटे फॉर्मुलेट कले थ्योरी ऑफ लिंकेज माने लिंकेज रो गोटे थ्योरी से देले जो लिंकेज फेनोमेनन को सपोर्ट करिया पई किछि व्यू से दैचंती। लिंकेज फेनोमेनन तो बुझिलो द ग्रुप टेंडेंसी ऑफ अ जीन टू बी इनहेरिटेड टुगेदर टू द सेम क्रोमोसोम टू रिटेन पेरेंटल कॉम्बिनेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन एटा होछि लिंकेज और मोर देन 2 जनरेशन पर्यंत से सेम पेरेंटल कैरेक्टर कंटिन्यू करिवो कहीं ना सही सेम पेरेंटल कैरेक्टर कंट्रोल करता जीनटा सेम गैमेट थ्रू रे मोर देन 2 जनरेशन पास करिवो विदाउट एनी चेंज सेटा को हम लिंक्ड जीन कहूचे प्रोसेस टाको हम लिंकेज बोली कहूचे।
तो प्रथम से कहूँ द जीन्स दैट शो लिंकेज आर सिचुएटेड इन द सेम क्रोमोजोम जो जीन लिंकेज शो करुच्ची लिंकेज शो कर मोर देन 2 जनरेशन विदाउट चेंज रे गामेट थ्रू से पास कर जाऊ दैट इज लिंकेज शो करिया कथा माने होची सेया एंड दैट मस्ट बी सिचुएटेड इन द सेम क्रोमोजोम एटा प्रथम कथा जे गोटे क्रोमोजोम रे सेगुडा रहथो न जीवनी क्रोमोजोम थ्रू से जीव तो ऑल द लिंक्ड जीन्स आर सिचुएटेड इन द सेम क्रोमोजोम सेकंड द लिंक्ड जीन्स रिमेन इन अ लिनियर फैशन इन द क्रोमोजोम एवं समस्त लिंक्ड जीन गोटे लिनियर फैशन ले क्रोमोजोम ऊपर थिबो सेकंड पॉइंट आसला थर्ड आसला द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज तेणु जो जीन अरेंजमेंट होती जदि तार डिस्टेंस वाइडर अधिका हो तार डिग्री ऑफ जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कम हम जब क्लोजर प्लेसिंग हम स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज से अधिका हम तो लिंकेज स्ट्रेंथ अधिका हम कम हम दैट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स ये गोटे व्यू से देले व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बा फार मोर डिस्टेंट जो प्लेस हो तो सेटा वीक हम लिंकेज स्ट्रेंथ व्हेन द क्लोजली प्लेस्ड तो सेटा हो तुम डिग्री ऑफ लिंकेज हाई हम एंड द लिंक्ड जीन्स or those genes present within the same chromosome and inherit together, that is linked genes. The linked genes remain in their original combination during the course of inheritance. So during the course of inheritance all the linked genes inherited together and remain in their original combination जो सेम कैरेक्टर कंटिन्यू करे से ओरिजिनल कॉम्बिनेशन से रही विदाउट एनी चेंज तापर आसला अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स जो लिंक्ड जीन होची ता दी प्रकार अरेंजमेंट अछि गोटे होची सीस अरेंजमेंट और गोटे ट्रांस अरेंजमेंट सीस अरेंजमेंट ट्रांस अरेंजमेंट रो माने होची या माने कर गोटे जीन कॉम्बिनेशन माने कर कैपिटल सी कैपिटल एस आउट जीन क्रोमोजोम वाला स्मॉल सी स्मॉल एस ये गोटे अरेंजमेंट आउट अरेंजमेंट आछला कैपिटल सी स्मॉल एस स्मॉल सी कैपिटल एस both dominant gene present in one chromosome, both recessive gene present in one chromosome. One dominant, one recessive, one dominant. So this arrangement is trans arrangement. This arrangement is cis arrangement. So दी प्रकार arrangement हुए. Expression समान आसो. ये भी से colorful round आसो. ये भी colorful round कारण capital C combination भीतर अच्छी. जो एटा homozygous माने अच्छी. धर माने करो माने दीटा तक expression same. कारण एटी जहाँ अच्छी एटी गुटे अच्छी. किंतु अरेंजमेंट डिफरेंट अच्छी यही टाइप अरेंजमेंट जो गोटे क्रोमोजोम दीटा डोमिनांट जीन रहे आउ दीटा जगह रिसेसिव रहे बा आउ गोटे केस डोमिनांट रिसेसिव अल्टरनेटिव रही जाए तो जो डोमिनांट रिसेसिव अल्टरनेटिव रही जाए ट्रांस जो सेपरेटली डोमिनांट जीन रिसेसिव जीन सेपरेटली अरेंज होती सीस अरेंजमेंट कहूँ तो तब देखी दियो लेखाटा देख द टू लिंक्ड जीन्स ऑफ ए हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स कैन हैव टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट गोटे ये भी हेटेरोजाइगस ये भी हेटेरोजाइगस कारण एटी भी दी प्रकार है एटी भी दी प्रकार है बोथ आर हेटेरोजाइगस बट अरेंजमेंट डिफरेंट वन इज सीस अरेंजमेंट अनदर इज ट्रांस अरेंजमेंट तो सीस अरेंजमेंट आउट ऑफ टू जीन पेयर्स इफ ए क्रोमोजोम carries two dominant gene and two recessive allele in the other chromosome गोटे क्रोमोजोम में डोमिनेंट जीन आउट क्रोमोजोम में सेपरेटली रहतो रिसेसिव जीन जेमि अटैच दैट इज सीस ट्रांस होची when one chromosome carries dominant and recessive similarly other one is recessive and dominant ए टाइप अरेंजमेंट दिले ताको हम करबा दैट इज ट्रांस अरेंजमेंट एक्सप्रेशन डिफरेंस किछ नै एक्सप्रेशन सेम बट अरेंजमेंट इज डिफरेंट then come the types of linkage type there are two types of linkage audio video class on तो कंप्लीट लिंकेज आउट इनकम्प्लीट लिंकेज कंप्लीट लिंकेज होची फर्स्ट व्हेन ए पर्टिकुलर क्रोमोजोम इनहेरिट टुगेदर कैरी द पेरेंटल कॉम्बिनेशंस मोर देन टू जनरेशंस से होची कंप्लीट लिंकेज इनकम्प्लीट लिंकेज होची इफ few percentage of non parental characters appears
जदि पेरेंटाल कैरेक्टर सहित किसी नॉन पेरेंट कैरेक्टर एपियर करे तार सहीटा को आम कह इनकम्प्लीट लिंकेज कारण 100% कला ना एपियर जोटा कि गोटे एक्जामपल मुझे देखिए तुम +2 आसूना बोधे डिटेल तथा मुझे गोटे एक्जामपल देखी दियो ग्रे बॉडी विथ वेस्टिजियल विंग गोटे ड्रोसोफिला एक्जामपल दिखाई ग्रे बॉडी वेस्टिजियल विंग ब्लैक बॉडी लॉन्ग विंग ग्रे बॉडी वेस्टिजियल विंग थिला कैपिटल बी डोमिनेंट कलर वेस्टिजियल स्मॉल बी बिकॉज रिसेसिव स्मॉल बी ग्रे रो अपोजिट दैट इज ब्लैक कैपिटल बी लॉन्ग तो ब्लैक गोटे मैंने दुटा क्यारेक्टर थी गोटे ड्रोसोफिला को क्रॉस कराई F1 ग्रे लॉन्ग आसी कहीं आसीना से जो हेटेरोजाइगस कंडीशन कैपिटल बी भी अच्छी कैपिटल बी भी अच्छी तो कैपिटल बी फॉर लॉन्ग कैपिटल बी फॉर ग्रे तो F1 आसला ग्रे बॉडी विथ लॉन्ग विंग जब टेस्ट क्रॉस करा टेस्ट कर दुटा रिसेसिव मैंने ब्लैक और वेस्टिजियल क्रॉस कला जो दुटा आसला रिजल्ट F2 रे देख आसी ग्रे वेस्टिजियल ब्लैक लॉन्ग जो दुईटा पेरेंटल कैरेक्टर ही थिला आम डेफिनेशन अनुसार व्हेन द पेरेंटल कैरेक्टर रिटेन इन F2 जनरेशन और मोर देन F2 जनरेशन ये जो एग्जांपल दिखाई कंप्लीट लिंकेज एग्जांपल दिखाई दैट मीन्स विदाउट एनी चेंज सेम पेरेंटल कैरेक्टर्स अपीयर इन F2 जनरेशन ये कंप्लीट लिंकेज इनकम्प्लीट लिंकेज टिके भेरी कर माने क्रॉस ओवर हो जाइए क्रॉस ओवर हो माने गोटे ब्लू फ्लावर लॉन्ग फुलेन सहित क्रॉस कराई रेड फ्लावर राउंड फुलेन रेड राउंड है रिसेसिव ब्लू लॉन्ग है डोमिनेंट तुम F1 जेहेतु कैपिटल बी कैपिटल एल दुईटा जाक रही जाऊँगी गामेटोजेनेसिस तुम से आगुरी अनेक पढ़ा तो बुझीपार एपटर कैपिटल बी कैपिटल बेले गोटे आसला स्मॉल बी स्मॉल एल गोटे आसला तेणु F1 जो हेटेरोजाइगस आसला से कैपिटल बी भी अच्छी कैपिटल एल भी अच्छी सो दैट सी जो एक्सप्रेशन आसो से ब्लू लॉन्ग रे आसो दैट इज कॉल्ड ब्लू लॉन्ग तेणु जिते टेस्ट क्रॉस करागला से F1 ब्लू लॉन्ग सहित रेड राउंड को रेजल्ट आसला 4 प्रकार जिन 71117 आसूला एक्जाक्ट सी टाइप रेजल्ट आसी तो दुटा पेरेंटल कैरेक्टर ब्लू लॉन्ग और रेड राउंड सी आसी 87% रे आउ द नॉन पेरेंट माने ब्लू एथुर कोन सेथुर कोन ब्लू ब्लू कलर आसी गोटे पेरेंट राउंड आसी गोटे पेरेंट रेड आसी गोटे पेरेंट लॉन्ग आसी गोटे पेरेंट जमी सेठी 7711 एक्जाक्ट कंडीशन एठी हिच तो दुटा नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन आसी 13% पेरेंटल कॉम्बिनेशन आसी 87% तो एई जो आसी एटा ड्यू टू क्रॉस ओवर इंटरचेंज ऑफ क्रोमैटिड सेगमेंट हो जाइए सो दैट कंप्लीट लिंकेज फेनोमेनन एस्टाब्लिश कर पारु नाही तेणु किसी नॉन पेरेंटल कैरेक्टर से अपीयर कर सो दैट इज इनकम्प्लीट लिंकेज एक्चुअली यूनिवर्साली कौन हुए ना इनकम्प्लीट लिंकेज ही सब आसे कंप्लीट लिंकेज रेयर आसे कहीं ना जो गामेट फॉर्मेशन हुए गामेट फॉर्मेशन क्रॉसिंग ओवर हुए और क्रॉसिंग ओवर है माने क्रोमैटिड सेगमेंट एक्सचेंज हम तो क्रोमैटिड सेगमेंट जो एक्सचेंज हो तो सही नॉन पेरेंटल कैरेक्टर आसो सो दैट रेयर फेनोमेनन होची कंप्लीट लिंकेज बट थ्योरेटिकली जब ड्रोसोफिला केस एग्जांपल डिक्टेट होती तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आम कहूँ जदि पेरेंटल कैरेक्टर कंटिन्यू करे F2 जनरेशन मोर देन F2 जनरेशन विदाउट एनी चेंज से कंप्लीट लिंकेज जदि फ्यू परसेंटेज ऑफ नॉन पेरेंटल कैरेक्टर आसीगला तार सहीट हम इनकम्प्लीट लिंकेज और आसवाई कारण होची जे क्रॉसिंग ओवर हुए म्यूसिस समय जब गामेट फॉर्मेशन हुए क्रॉस ओवर हेल्ले क्रोमैटिड सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाए तो ये क्रोमैटिड गोटे पोर्सन एक्सचेंज आउ गोटे क्रोमैटिड सहित सी क्रोमैटिड गोटे पोर्सन या सहित चेंज हो जाए सो दैट इंटरमिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर हो जाए जो कि किसी नॉन पेरेंटल कैरेक्टर एपियर करे तापर सिग्निफिकेंस क्रॉसिंग ओवर लिखाई भूल पिला से देखीदेव से सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज एक्चुअली लेख लोक भूल लिखाई तुम करेक्शन कर दो नोटे टे सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर लिखाई जाइए हवा कथा सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज कारण क्रॉसिंग ओवर तापर स्टार्ट हो पढ़ा है तो सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज रे इट होल्ड्स द पेरेंटल कैरेक्टर टुगेदर एंड ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट द अपीयरेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन कंप्लीट लिंकेज कथा कहला जे पेरेंटल कैरेक्टर से कैरी करिवो एंड इट डिसअलाउ द अपीयरेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन जेहेतु क्रॉसिंग ओवर हो नाही तेणु कौन न्यू कॉम्बिनेशन कौन न्यू कैरेक्टर एपियर करिवार पॉसिबिलिटी कम रहे एट मैक्सिमम केस रे कौन हुए ना द सेम पेरेंटल कैरेक्टर कंटिन्यूज फॉर मोर देन 2 generations सेकंड पॉइंट आसला इट हेल्प्स मेंटेनिंग द वैल्यूएबल ट्रेट्स ए न्यूली डेवलप्ड वेराइटी तो गोटे वैल्यूएबल ट्रेट तुम गोटे पेरेंटल कैरेक्टर गोटे गुड क्वालिटी कैरी कर किसी गुड ट्रेट अच्छी भल कैरेक्टर हो सेम कैरेक्टर कंटिन्यू कर चलो से चेंज होना ये गोटे तार प्लस पॉइंट
विदाउट एनी चेंज गोटे भैल्युएबल कैरेक्टर से मेंटेन करे जते न्यू भेराइटी आसो डेभलप आसो से सेम पेरेंटल कैरेक्टर गुड क्वालिटी थिले से सेम गुड क्वालिटी कंट्रोलिंग कैरेक्टर ट्रांसमिट्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। थर्ड होची इट डिसअलाउ द प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग टू कंबाइन ऑल द डिजायरेबल ट्रेट्स इन अ सिंगल वेराइटी। So more than 2 plants which contains different types of good qualities. So through linkage, it is not possible to combine 2 different characters of 2 different plants into one. Dita different जोटा plant breeding रे करा हो जे दीटा different plant रे character को आमे गोटे plant को आनिकी combine कर दबा। So this is not possible in case of linkage. तो linkage रो तमरो 3टा पॉइंट आसला। प्रथम होची द पेरेंटल कैरेक्टर एपियर्स एंड रेस्ट्रिक्ट द अपीयरेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन कौन से न्यू कॉम्बिनेशन एपियर करियर पॉसिबिलिटी रहे ना। सेकेंड इट हेल्प्स मेंटेनिंग द वैल्यूएबल ट्रेट्स ऑफ ए न्यूली डेवलप्ड वेराइटी। गोटे न्यूली डेवलप्ड वेराइटी जहाँ भी डेवलप कर सेम गुड क्वालिटी दोज क्वालिटी प्रेजेंट इन द पेरेंटल प्लांट्स सेम विदाउट एनी चेंज से सेम क्वालिटी मेंटेन्स से मेंटेन करे जब क्रॉसिंग ओवर हुए ना। थर्ड होची दीटा डिफरेंट प्लांट रो कैरेक्टर को गोटे प्लांट को इंट्रोड्यूस करा जाई परिबो नाही। डिसअलाउ द प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग कौन से ब्रीडिंग प्रोग्राम अलाउ करे नाही कारण कैरेक्टर इंटरमिक्सिंग एथि हुए नाही तो दीटा प्लांट रो कैरेक्टर को एथि कंबाइन करा जाई परिबो नाही। तो लिंकेज रे सिग्निफिकेंस होची एथि क्रॉसिंग ओवर तापर आसो क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर हम नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करबा। सो ये पर्यंत रहिला हो थैंक यू। तापस ए प्रबंध नमस्कार जल्दी तो होगी तो क्लास में ना आराम कर देख इसका उधर उधर दिखला सॉरी करना चाहता हूं सब आगे दे दे